May I take this honor and privilege of inviting Engineer Henya Bam, President La Parada District Football Association, to formally welcome the gathering and for the presidential speech. सभी को आज की इस स्टेट वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी पे अब मैं हेन्या बाम लापारा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट इंजीनियर कार्मर रिराम जी, प्रेसिडेंट कारको वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इंजीनियर इपे बासर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिवीजन बासर, माय रेस्पेक्ट गोज टू ट्रेजरर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कम होनररी सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन किपा अजय जी, रेस्पेक्टेड चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल कमिटी श्री गविन कातो जी, अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो ईटानगर से यहाँ आए हैं, और हमारे बीच जो मैच ऑफिशियल्स एपीएपी की तरफ से ये इस टूर्नामेंट के दौरान हमारे साथ रहे, उनको भी हार्दिक वेलकम। सब एचओडीज जो डाइस पे बैठे हैं और हमारे इनवाइटीज पोनू पार्टी और आज के दोनों फाइनलिस्ट टीम, हमारे मीडिया पार्टनर्स और लफारादा के फुटबॉल प्रेमियों, मैं फिर से अपने दिल की गहराइयों से आज के हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में भी हमें ये टाइम दिया और आज का इस क्लोजिंग सेरेमनी को आपने ऐसे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर आने का हमें जो मौका प्रदान किया है। जय हिंद, जय लपाराडा। Felicitating all our guests. First up, may I take this honor and privilege of inviting Engineer Carmen Riram sir, President Karkua Welfare Association, to kindly receive a small token of love and small token of appreciation from the side of La Parada District Football Association. Sir, thank you very much for your kind presence. Your presence means a lot to us. Thank you so much. Up next, I would like to invite and request with the honor Engineer Ipo Basar sir, Executive Engineer PWD, to kindly receive a small token of love. Thank you very much, sir. Up next, Kipa Ajay sir, Treasurer All India Football Federation, from Honorary Secretary Arunachal Pradesh Football Association. We have come all the way from Italy and we really appreciate you for that, sir. Thank you very much, sir, once again. Thank you very much, everyone. I take this time to request General Jamo sir, Executive Member Arunachal Pradesh Football Association, to please receive a small token of love. Thank you so much, sir. You were there with us in the opening ceremony and we really appreciate your presence. Gungte Chapi sir, to please receive a small token of love from the side of La Parada District Football Association. Do the honor. Mr. Chapi Gungte, Executive Member of Arunachal Pradesh Football Association. Chaupao sir, Executive Member, Arunachal Pradesh Football Association. Sir is the Executive Member of Arunachal Pradesh Football Association. Gachi Doke sir, Chief Advisor, Arunachal Pradesh Football Association, to kindly receive a small token of love and appreciation. Gachi Doke sir, Chief Advisor, Arunachal Pradesh Football Association. Thank you very much, sir. Up next, I would like to request General Secretary, La Parada District Football Association, Mari Nyodu sir, to do the honor of felicitating our next guest.
Pentam Siga sir, who is also the executive member of Arunachal Pradesh Football Association. Can we have a huge round of applause? Being the honor is General Secretary, Laparada District Football Association. Up next, would like to felicitate Kipa Niva sir, who is also the executive member of Arunachal Pradesh Football Association. Come, Chairman of Grassroots Football. Executive member of Arunachal Pradesh Football Association. Come, Chairman of Grassroots Football Association. Thank you so much, sir. Up next, we would like to felicitate Ravin Kato sir, Chairman Women Football Committee, come Treasurer Arunachal Pradesh Football Association. I'm very much thankful to Laparada District Football Association for giving me a chance to be today's guest of honor in the closing ceremony of State Women's Football Championship 2024, organized by Arunachal Football Association. I am also a very big fan of football games, so today मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर पे बुलाया गया है. इसके लिए मैं एज ए फुटबॉल लवर के हिसाब से मैं भी मैंने मानता हूँ कि मेरे साथ बहुत जस्टिस हुआ है. फुटबॉल को इतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मैंने बुलाया गया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड टुडे. Football is a way of life that teaches us valuable values like teamwork, discipline, and persistence. It brings people together regardless of background, culture, or language. Everybody knows the language of sports, especially the language of football. So, why do people love football? इसमें ऐसा है कि people they are looking for the thrill of watching well-executed goal, the agony of a missed penalty, and joy of celebrating a victory with fellow fans. They are looking for the element of suspense that keeps everyone at the edge of their seats till the end of the game. People cherish the ending of a suspenseful game throughout the day. This is the power of the game. The audience plays a very important role. Games and sports are necessary for individuals' overall development. Unlike olden days, especially for we northeastern part of India, with the advancement of games and sports policy program of Indian government, with the help of social media, today we are at par with the rest of our country in terms of opportunity in games and sports. Government is trying every possible way to tap talents in every field of games and sports. Today, we have ample opportunities to show our talents in circle level, district level, state level, national levels, and finally to international levels. Organizations like District Football Association, Arunachal Pradesh Football Association, it gives very good opportunities to our players. I have a strong belief that the hard work of our players with the help of Indian Football Association will make India to FIFA World Cup one day, and the FIFA World Cup will be ours one day. आज का इसमें फाइनल में हमारा कुरुंकु में और लोहित, तो मेरी तरफ से दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक. तो उसके साथ में मैंने अभी जस्ट मीटिंग किया. हमारा जो DFA प्रेसिडेंट्स वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग, सियोमी, इनके साथ अभी जस्ट मैं मीटिंग करके आया. जितना भी हमारा यहाँ का सियांग बेल्ट का जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हमने आज ये निर्णय लिया, ये रीजन को, ये सियांग जोन को, फुटबॉल को डेवलप करने के लिए इसे एक सस्टेनेबल मॉडल में मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ. सियांग बेल्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट के बीच चैंपियनशिप होगा. वो चैंपियनशिप जो है फ्रेंचाइजी बेस पे होगा. फ्रेंचाइजी बेस पे होकर वहाँ खेलने, पहले हम लोग को कहा करता था, जब मैं फुटबॉल खेलता था, हमारा लोग कहता आपको फुटबॉल खेल के क्या मिला, हमें ये क्वेश्चन आता था. लेकिन ये क्वेश्चन को मैं आज के दौर में ख़त्म करना चाहता हूँ. मैं प्लेयर के सस्टेनेबल के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, हमारा रेफरीज के लिए काम करना चाहता हूँ, ताकि वो फुटबॉल को एक जरिया, कमाई के जरिया बनाए. और उसी में आप सस्टेनेबल हो गए, हेल्थ भी अच्छा रहेगा,
और गेम भी अब आगे बढ़ेगा। और इसी साथ ही साथ मैं अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी है, तो मैंने इसी तरह नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट है हमारा, तो उनको भी मैं अभी नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल लीग चालू करने के लिए हमने ऑलरेडी प्लान दिस वर्कआउट ऑलरेडी कर चुका है। कुछ आने वाला साल में जैसे यहाँ हमने सियांग बेल्ट का एक जोन हमने क्रिएट किया चैंपियनशिप, उसी तरह सुबनसिरी बेल्ट में एक बनाएंगे, उसी तरह कमिंग बेल्ट में एक बनाएंगे, उसी तरह ईस्टर्न पार्ट में हम एक चैंपियनशिप क्रिएट करेंगे। तो एक ही समय एक ही तारीख में सारा किक ऑफ होगा, तो वहाँ का जो टॉप लेवल का जो प्लेयर है या क्लब जो विनर को फिर हम ईटानगर लाके स्टेट चैंपियनशिप कराएंगे। तब हमारा फुटबॉल बदलने में समय नहीं लगेगा। आने वाला साल में, आने वाला दिन में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा फुटबॉल ऐसा एक गेम है, लोगों को मिलाने का काम करता है, लोगों को एक दूसरे को प्यार को बांटने के लिए फुटबॉल काम करता है, और इससे सुंदर चीज है ही नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा अगर फुटबॉल नहीं आता, हमारा जो बेटिया कुरुंग में से लेपारादा नहीं आता, अगर फुटबॉल नहीं होता लेपारादा से कैपिटल में खेलने के लिए नहीं आता, ये एक दूसरे को मिलन करा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेम। तो अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हमने ये एक फैसला भी किया हुआ है कि फुटबॉल का जरिए हमें ड्रग्स से फाइट करना, ड्रग्स को हमको फाइट करना, हमारा लोग गलत जगह में न जाए। अगर आप स्पोर्ट्स में बिजी रहेगा तो गलत सोचने का तरीका खत्म हो जाए। उसी तरह उसमें हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम, एक स्लोगन भी हम लोग बनाया हुआ है, नशा छोड़ो फुटबॉल से जोड़ो। ये हम लोग ने पहल शुरू कर दिया है और अपकमिंग डेज में आई थिंक हम लोग और भी कोशिश करेंगे, विमेन फुटबॉल को और हम लोग आगे ले जाएंगे और यहीं चैंपियनशिप से सिलेक्शन होके मध्य प्रदेश में स्थित टीम जा रहा है। ये 14 तारीख को निकलेगा, यही चैंपियनशिप से सिलेक्ट हुआ वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। 2018 को आपका डिस्ट्रिक्ट आपको मिला, आई थिंक 2018 के बाद में लेपारादा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद एपीएफए का साथ में प्रोविजनली अटैचमेंट मतलब एसोसिएट है। नाउ टुडे ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट, मैं लेपारादा को आज मैं परमानेंट मेंबरशिप ग्रांट कर रहा हूं। तो और उनको काम करने को और एनर्जी, एक हौसला मैं ये दे रहा हूं और मेरा उम्मीद को वो हम एपीएफए का उम्मीद को हमेशा आप बनाए रखेंगे और स्पेशली ग्रास रूट प्रोग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा लोग होता है उनको भी थोड़ा आप साथ में लेके चलने के लिए कोशिश कीजिए। आज का टूर्नामेंट जो है मेनली वोमेन का इसका चैंपियनशिप है, तो इसलिए मैं वोमेन का बारे में थोड़ा सा लिख के लाया हूँ। सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, स्पोर्ट्स में वोमेन का क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जिसे मैं सोचता हूँ कि इसको बोलना जरूरी है। फुटबॉल like other sports has the power to inspire and unite, and as today we celebrate the Women's Football Championship 2024, these women have worked so hard to get here. We remind of the broader fight of equality and recognition of women in every field of life. Women is having the freedom to dream and the strength to achieve. It's about creating opportunities where every woman, whether on the field or in the boardroom or in any space, can shine and reach her full potential. Even like today's not only highlight the importance of sports in fostering leadership, resilience, and teamwork, but it also serves as a powerful reminder that women can excel
in any domain of life when given the chances. To the players, you are an inspiration to so many. Your hard work, discipline and dedication are paving the way for a future generation of girls who will follow in your footsteps. Every match you play is a statement that all men belong to every arena of life. As a society, it is our responsibility to support and uplift women in their every endeavor, to break down the barriers that still exist and to ensure that no dreams remain unfulfilled because of the gender differences. वुमेन जो फाइनलिस्ट है, मुझे बताया गया कि एक कुरुंगुमे डिस्ट्रिक्ट का है और दूसरा लोहित डिस्ट्रिक्ट का है। तो अभी यहाँ तक फाइनल तक पहुँचने में आप सभी ने काफ़ी मेहनत किया, आप लोग ने काफ़ी डेडिकेशन, अपने टीम वर्क और काफ़ी मेहनत करने के बाद इस लेवल तक पहुँचा है। तो मैं अपने ओर से दोनों टीम को ऑल द बेस्ट देता हूँ और आई विश द बेटर टीम विन्स एंड whoever perform better wins the tournament. Thank you, and lastly thank all the organizing committee members for giving me this opportunity to be the chief guest of today's wonderful celebration of state level football tournament. Thank you. Kurungkume District and Lohit District. Kurungkume Girls Football Team and Lohit District. So once again, can we have a huge round of applause for Kurungume District and Lohit District, ladies and gentlemen. Now I would like to invite all our guests to please get down to the arena for the players' inspection. I request all our guests, our esteemed guests, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जय गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। jersey number 23 Binita Panging, jersey number 06 Tara Kiana. Before the prize distribution ceremony, so now it's time to felicitate the hero of the championship. Yes,
our match officials. I would like to invite Sri Garbin Kato, Chairman Women Football Committee, to do the honor of honoring all our match officials. At the same time, I would like to also invite Cho Kang Sir, to Vice Chairman Women Football Committee, to please join Sri Garbin Kato. Tana Tasar Tara, match official Tana Tasar Tara. Can we have a huge round of applause for Tana Tasar Tara? Up next, Miss Renu Padung. Up next, Miss Renu Padung. For all our match officials is Miss Renu Padung. Up next, Miss Daina Tang. Miss Daina Tang. Miss Daina Tang. Next, Darlo Gadil. Darlo Gadil. Up next, Jumbom Lombul. Up next, can we have Karba Kambu? Thank you so much. Mr. Kelly Basar and Mogu Rekha. And now, we take this honor of felicitating the match commissioner, who is none other than Taba Raju. We are going to distribute the prizes for individual category first. So in the individual category, we first have the player of the match, the player of final match, and then to do the honor, I would like to invite ESC La Parada, ma'am, to please kindly do the honor of giving away the prize. And the player of the match goes to Miss Lingdum Yalo, jersey number 14 from Kurunkume district. Lingdum Yalo from Kurunkume district. Congratulations, Lingdum Yalo. We'll continue with the individual prizes. Up next, thank you so much, ma'am. Up next, I would like to invite our guest of honor of today's event, Engineer Ipa Basal sir, to kindly do the honor of giving away prizes. The best goalkeeper is going home with a cash prize of rupees 5,000 along with trophy. And the Golden Globe, the best goalkeeper of the championship, goes to Binita Panging from Kurunkume district. Binita Panging, jersey number 23 from Kurunkume district. Can we have a huge round of applause for Miss Binita Panging? We have this prize for highest scorer of this States Women Football Championship 2023. The Golden Boots is going away home with a trophy and case prize of 5,000 rupees. And the Golden Boots goes to Miss Yumlam Lali, jersey number 18 from Kurunkume district. So finally, it's now the time to announce the player of this States Women Football Championship 2024. And the player of this championship is going away home with a case prize of 6,000 with a trophy. And the player of the tournament, any guesses? The player of the tournament goes to Tadar Marli, jersey number 99 from Kurunkume district. She is the player of the championship, that is the States Women Football Championship 2023. Congratulations to all the winners. I would like to invite Gache Doke sir, Chief Advisor, Arunachal Pradesh Football Association, to kindly do the honor of giving away prize. And the fair play title goes to, yes, East Coming District, going away home with the prize with a trophy and case amount of 5,000 rupees.
the fair play team. Can we have a huge round of applause for East Kameng District for beautiful display of their game skills and their passions. Now it's time to give away the trophy and case award to the runners-up of State's Women Football Championship. To do the honor, I would like to invite our chief guest of today's event, Engineer Karmel Ram sir, to please do the honor of giving away prizes to our runners-up. So the first runner-up of State's Women Football Championship goes to Lohit District. So can we have a huge round of applause for Lohit District, ladies and gentlemen. Lohit District is going away home with the title of runners-up of State's Women Football Championship 2023. Congratulations, girls. We believe that today both the team they have played really well. And the coach and the manager of Lohit District, we invite you to please join the team, to come along with the team, the coach and the managers of Lohit District. A hearty congratulations to the team for sticking till the end. So the runners-up is going away with a trophy, medal, with case prize and a trophy. Case prize of 30,000. The runners-up goes to, yes, Lohit District. Once again, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Lohit District? Okay, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir, for doing the honor. And the winner of State's Women Football Championship goes to Kurung Kume District. Can we have a huge round of applause for Kurung Kume District, ladies and gentlemen? In the sky blue jersey, we have the winner signing and smiling. Congratulations, girls. Would also like to invite all the coaches and managers of the team to please join. When the team join along, come along with the team, all the coaches and managers. Yes, ladies and gentlemen, they are the winner of State's Women Football Championship 2024. Once again, give it up for Kurung Kume District. Amazing display of football skills. We are very much glad and honored seeing such skills. We are privileged to have witnessed such an exciting final match played between Kurung Kume and Lohit. Yes, can we once again have a huge round of applause for all the coaches and managers for their tireless work, for their dedication. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. Yes, now it's time to give away the trophy to the winners along with case prize of rupees 50,000.